Welcome to the Ielts Achiever. I'm your trainer for this purpose of doing this reading. I think this is the first video I'm posting on my channel about any kind of reading or any Ielts material that is available on all the websites and you have already visited. So if you are the first one who is watching this video, then make sure you subscribe my channel. Also hit the like button that is below you. So I would rather speak in Hindi for you guys because I think that you are comfortable in understanding the core concepts or the full concepts that I'm going to tell you a part about. So let's just go and do the reading then. बिफोर एक्चुअली रीडिंग द पैसेज आपको अपने क्वेश्चंस पे जाना है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजीली ग्रैब कर सकें और द इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग फॉर आपको पता लग सके. सो लेट्स जस्ट गो टू योर क्वेश्चंस. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको ट्रू फॉल्स नोट गिवन में दिए हुए हैं. आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देने हैं की वर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर रीडिंग पैसेज. So first question is taxonomic research involve comparing members of one group of ants. आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं एक ग्रुप को आपका कंपेयर करना. New species of ants are frequently identified the taxonomist. So new species and आपका taxonomists. Range is the key criterion for all the ecological collections. Range is the key criteria for the ecological collection. This should be your keyword. A single collection of ant can generally be used for both taxonomic and ecological. A single collection must be highlighted and these two words are the same. So let's just do the or read these kind of questions for further आपकी reading के लिए. So hand collecting using bait, sampling ground litter and using a fitful trap. These are some of the methods. By these you can easily grab or you can easily catch the ants. So इनके questions पढ़ते हैं. It is preferable to take specimens. Specimens होते हैं आपके sample from any group of ants. आप किसी भी group of ants से sample ले सकते हैं. It is particularly effective for जो वेट बेट हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वेट हैबिटेट्स के लिए. इट इज़ वेरी गुड मेथड फॉर द स्पीसीज़ विच आर हार्ड टू फाइंड. वेरी गुड मेथड है जिसके लिए आपको बहुत मुश्किल होती है टू फाइंड. लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. लिटिल टाइम और एफर्ट आपको इसमें रिक्वायर्ड है. सेपरेट कंटेनर्स आर यूज फॉर द इंडिविजुअल स्पीसीज. नॉन अल्कोहलिक शुड बी यूज्ड. So let's just go to our passage and find out these kind of question if we gonna find them all. So पहला क्वेश्चन था आपका taxonomic research comparing the members of one group of ants. This is your passage. First जो 4 lines होती हैं, first 4-5 line जो होती हैं that are of journal. So read them very quickly and just take their overview as well. Collecting ants are the simple and picking up the stray ones and placing them in a glass jar. Okay. Complicated as comparing the exotic survey of all the species present in the area and estimating their relative confidence. The exact method used on depend on the final purpose of collections. Okay. So for taxonomy, this is very important word क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था taxonomic research. If you remember, हमने यहाँ पे पढ़ा था taxonomic research. So this will be cancelled from here. Involves comparing the members of one group of ants. Okay, so or classification long series from a single nest. ये एक single nest से long series थी which contain all the caste worker involving majors and minors and present in the queen's males are desirable to allow their determination of variation. Simple, isn't it? ये कह रहे हैं कि एक सीरीज़ थी जिसमें कई सारी आंट्स थी, उनकी कास्ट को कंपेयर किया जा रहा है. कास्ट को कंपेयर किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा. सो कंपेयरिंग ऑल द आंट्स फ्रॉम वन ग्रुप एंड इट इज़ गोना बी ट्रू फॉर यू गाइस. सो इट इज़ ट्रू. सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर न्यू स्पीसीज़ की बात हो रही थी, पर यहाँ पे अभी तक कोई न्यू स्पीसीज़ की बात नहीं हुई है. खैर वो बात अलग है. अब हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं आगे.
सो नाउ वी गोइंग टू रीड द पैसेज फर्स्ट, क्योंकि हमने अभी अभी क्वेश्चन जो है वो रीड किया है। कहता है कि अनफॉर्चुनेटली दीज मेथड्स आर नॉट ऑलवेज कंपेटेबल। सो हियर इज़ अ ट्रिक। अगर आपने ऊपर जो है पैसेज अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने पैसेज जो है ऊपर अच्छे से पढ़ा था तो यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। पर इसने आगे भी इसको डिफ़ाइन किया है थोड़ा। ये जो आपकी 3 लाइन्स हैं इनमें इस आंसर को डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर आपने ऊपर वाला नहीं पढ़ा तो आपको आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। कहता है कि टैक्सोमिस्ट समटाइम्स ओवरलुक्स होल स्पीसीज इन फेवर ऑफ दोज ग्रुप करंटली अंडर स्टडी। वो ओवरलुक कर लेते थे स्पीशीज़ को, जो उनको नई नई स्पीशीज़ मिलती थी उनको ओवरलुक कर देते थे इन फेवर जो उनके पास पहले से थी। While the ecologist often collects only the limited number of species for each species, जो इकोलॉजिस्ट थे वो कई सारे सैंपल नहीं लेते थे, लिमिटेड सैंपल लेते थे ऑफ ईच स्पीसीज का, दस रिड्यूसिंग देयर वैल्यू फॉर द टैक्सोमिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया है। इन्होंने दोनों को कंट्रास्ट कर दिया और आपके क्वेश्चन में दोनों फेवर में है। कह रहा है कि ए सिंगल कलेक्शन ऑफ आर्ट कैन जनरली बी यूज फॉर बोथ। पर यहाँ पर ये कह रहा है कि आप तो करते हो इग्नोर, जो स्पीसीज़ हैं, जो बाहर की स्पीसीज़ हैं उनको इग्नोर कर देते हो, जो उन फेवर जो आपके पास पहले से हैं। पर इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो कल्ला कल्ला जो आपका सैंपल होता है उसको इकट्ठा करते हैं फ्रॉम वन ग्रुप। सो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, इसीलिए आंसर आपका फॉल्स होगा। दिस विल बी फॉल्स। सो आपको अभी भी ये आंसर नहीं मिला है, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर नहीं मिलता तो दिस विल बी योर नोट बी गिवन। पर अब हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि अब आगे आने वाले हैं क्वेश्चन। हैंड कलेक्टिंग यूजिंग बेट, सैम्पलिंग लिटर एंड यूजिंग अ पिटफुल ट्रैप। हमने इसको पहले पढ़ रखा है, तो अब हम सीधा पैसेज पे चलेंगे। वी शुड रीड द पैसेज राइट नाउ। To collect a wide range of species as possible, several methods are used. These include the hand collecting, अभी अभी हमने पढ़ा, using bait to attract the ants, ground litter sampling and the fitful trap. Hand collecting consists of searching ants everywhere they like to occur. These includes ground, under rocks and other logs, then rotten box on ground, on trees, then vegetation and trees and on the okay. When possible, the collections should be made from nest or foraging columns and at least 20 to 25 individual collected. सो ये चीज़ हमने पढ़ी थी पहले ही क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो इट इज़ प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आंट्स। मतलब ये प्रेफरेबल होता है कि आप एक स्पेसिमेन ले आके आप एक नमूना ले फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आंट्स। मतलब अगर एक ग्रुप है तो उनमें से आप एक नमूना ले सकते हैं या फिर एक सैम्पल जो है वो आप ले सकते हैं। When possible, collection should be made from the nest or foraging column and at least 20 to 25 individual collected। मतलब हज़ारों के जो एक ग्रुप होता है उसमें से आप 20 to 25 इंडिविजुअल या फिर जो एंट्स हैं उनको आप ले सकते हो। सो दिस इज़ आपका ए हैंड कलेक्टिंग। ईजी रीडिंग है आपकी ये। सो वी गना सॉर्ट ऑफ। अब हम सेकंड को देखते हैं, अगर हमें मिल जाता है। फिलहाल तो हम हैंड कलेक्टिंग को ही पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है दिस विल इंश्योर दैट द ऑल इंडिविजुअल आर ऑफ द सेम स्पीशीज एंड इंक्रीज देयर वैल्यू ऑफ द डिटेल स्टडीज सिंस सम स्पीशीज आर लार्जली नोटोरियल एंड कलेक्टिंग शुड नॉट बी कन्फाइंड टू डे टाइम। Specimens are collecting using a sprinter, forceps, a fine or a motion paintbrush or fingers if ants are known not to sting. Individual insects are placed in a plastic or glass tube and capacity to small ants 5 to 8 large ant containing 75 to 95 ethanol and plastic tubes will secure them to better than glass because they are lighter than they do break easily if mishandled. सो यहाँ पर देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी मिलता है तो नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज्ड, नो। सेपरेट कंटेनर्स आर यूज फॉर द इंडिविजुअल स्पीशीज,
यस, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल स्पीसीज की बात हुई है। खैर इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर भी पढ़ के देखना पड़ेगा कि अगर कोई आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो। लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड, नो। इट इज़ गुड मेथड फॉर स्पीसीज टू हार्ड टू फाइंड, नो, बिकॉज यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई कि देर इज़ एनी हार्ड टू फाइंड ऑफ एनी स्पीसीज और वी आर ट्राइंग टू फाइंड एनी स्पीसीज, सो इट इज़ नॉट। सो हमारा आंसर होगा ए, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर हैंड कलेक्टिंग की बात हो रही है और हमको सेपरेट कंटेनर यूज़ करने पड़ रहे हैं फॉर द इंडिविजुअल स्पीसीज एज वी रेड बिफोर। सो लेट्स जस्ट ट्राई अनदर क्वेश्चंस if we get from here. We have read this passage, now we gonna sort of do this one. Bait can be used to attract the concentrate forager. This often increase their number of individual increasing collected and attracts elusive and sugars and meats or oil will attract different kinds of species. A range should be utilized. These baits can be placed either on the ground and the trunks or tree large shrubs, and when the place on the ground the bait should be used to situated on a small paper cards or a flat light colored surfaces or in the test tubes or vital. This makes it easier sports ants and capture them before they are going to escape from the leaf litter. We have read in this line कि baits can be used to attract and concentrate the foragers. So we read from here using the baits. Are we getting any questions or are we getting any answer from this passage we have ever read? Let's try. Non-alcoholic preservative shall be used, no. It is preferable to take the species, we have done this before. It is particularly effective for the wet habitats, it is no. It is very good method for the species which are hard to find, yes. And why it is B? Let's find out. So we have read कि यहाँ पर baits को यूज़ किया जा रहा है to concentrate on forager and often increasing the number of individual collected attracts the species which are otherwise elusive. This is your answer, sir. कह रहे हैं कि यहाँ पर हम उन स्पीसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हार्ड टू फाइंड हैं, जो मिलती ही नहीं, हम बेट्स की मदद से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस विल गोना बी योर आंसर. सो लेट्स रीड द अनदर पैसेज फॉर फर्दर आंसर्स. Many ants are small and forage primarily in the layers of leaves and debris on the ground. Okay, collecting these species by hand can be difficult. Very important. One of the most successful ways to collect them in a gather of leaf litter in which they are foraging and extract their ants from it. This is most mostly done from the leaves and okay, for instance, as leaf litter derives from the upper ones and move downward, eventually fall in the bottoms are collected. Okay, this is method works especially well in the rainforests. We read the wet habitats. Habitats are the places where a person resides or where any no living or living things resides. So habitat is a synonym of residing a place where whatever you want. So wet places, it is very particularly effective for the wet places, and the answer is C, sir. So sampling ground litter as we read in this question. Now we have left with two questions, so let's try it out. Okay, so this concentrate on litter and remove the burns. Okay, it will allow the more litter and sampling this or using questions. Okay, pitfall trap, this is another method commonly used to collecting for the ants. A pitfall trap can be small container placed in a ground or surrounding the surface filled with a preservative. Yes, we read this from here. This is preservative, so we can get this question from here, I suppose. Let's just read the whole passage. Ants can be collected when they fall into the trap while foraging, and a diameter of the traps can be vary from 18 millimeter and to 10 centimeter from the number of use. The size of the trap can be used is influenced largely by the personal preferences, while they are determined by the study
being undertaken, the preservative used is very ethylene and glycol or propylene glycol or alcohol which evaporate quickly and traps will dry out. So here they are telling about the disadvantage to the preservative we are currently using about. So we should just prevent that preservative so that we can just go out with the process we are going before. एंड ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपको नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ करना चाहिए rather than doing the same as you done before. So the answer of that should be D, as we read in the using pitfall trap. So we are left with this little time and effort is required. I have just found out the answer of it and I'm going to tell you a part about that. So this will be the answer of this question. So just reading that, one advantage of pitfall trap is that they can use to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention required. मिनिमल मेंटेनेंस एंड आपकी जो है इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, सो देयर इज अ लिटिल टाइम रिक्वायर्ड. Without any doubt it is D. So this is all about the third part of your reading section. If you like this video, then make sure you subscribe my channel. Also hit the like button if you liked to. So I'm going to just post some videos on this channel about any kind of reading or listening or any kind of IELTS material that you have been seeking from past 2 years, 1 month, or you want to give your IELTS exam. So I will help you in finding out the solution that you have in known of.